that is of indirect and direct taxes. So I welcome our resource person, Dr. C.A. Bhavna Bidwani Madam. So she is very experienced person. She have completed her graduation, post-graduation in commerce, and then MPhil in commerce. And she have also cleared the NET examination in June 2010. And she's also CA. And she have also completed PhD from SRTMUN University, that is from Nanded. She have also published two research papers, and also she is engaged in many activities also. So now I would like to hand over this session to ma'am and start with the session. Thank you, Kumkum ma'am, for your sweet introduction. Welcome. Good morning, one and all. Madam, this is live streaming, na? That is on, no? Yes. Yeah. Yes, ma'am, it is Good. live stream. Yes. Good morning, one and all. Today we are on the first session of your crash course for the most important subject, which is one of the applied component, that is direct indirect taxation. In that, we are going to today talk about GST, that is your entire indirect taxation. So within this duration of 1 hour, I will try to complete the entire topics of all which is related with GST. And at the end, we will discuss how the paper would be going to appear for you all. What are the types of the questions which are going to be asked in the paper. So with that, I'm sharing with my first slide. Kumkum madam, I am just switching off my video. Is it okay? Oh, okay. Okay, Yes. ma'am. But along with your PPT, your video can be also visible. Okay, as you say. Yeah. Yes, ma'am. Both Okay, will work. Okay, ma'am. Okay. So when we talk about your indirect taxation subject, now the indirect taxation subject, it is being divided into 5 units from the University of Mumbai. If you see the paper, what they are asking, 40 marks we have on objectives as well as on theory, that is your short notes and theoretical questions, and 60 marks, I'm repeating 60 marks, it is on numerical problems. Now, your syllabus itself is divided into 5 units. Kumkum madam, any problem? The syllabus itself is being divided into 5 units. The first unit is introduction and definition. Then we have, that is levy and collection of tax. Then we have place, time and value of supply. We have input tax credit and the payment of taxation. And finally, we have registration. These are the 5 units in the entire syllabus. We start with the first unit. What exactly is expected from you to do in the first unit? First unit basically comprises of introduction to indirect taxation as well as all the definitions. As GST आप सब लोग पहली बार पढ़ रहे हो, any act जो भी हम पढ़ते हैं, it start with definitions. So we have definitions and introduction in unit number 1. Now what is expected from here? We expect at least 1 10 marks question from introduction and at least one definition from in the short notes. So 1 10 marks question and 1 definition plus 2 to 3 objectives we are expecting from this unit. So on and on, a coverage of 15 to 17 marks from this unit itself. One of the easiest unit, it is introduction to indirect taxation. Just to start with, I hope the PPT is visible properly. Yes, ma'am, it is visible. Yeah, thank you, Kumkum ma'am. Yeah, yes. Now to start with, yes. First of all, we have to understand what is a tax. When I say a tax, it is something which is levied by the government.
But when I say a indirect taxation, it is levied by the government on any product, or you can say nowadays on every product, on your income or any of the activity. So basically, it is the amount which is mandatory to be paid to the government so that government can fund their various public expenditures. In short, there are two types of taxation. One is direct taxation and one is indirect taxation. You all have done direct taxation in your TYBCOM semester 5. Now we are going to speak here about indirect taxation. Apart from income tax, there was existence of wealth tax, property tax, gift tax, which is not in your syllabus. And in your fifth sem, you had just studied about income tax. When we come to indirect taxation, it is the type of a tax where the incidence and the impact of the taxation does not fall on the same entity. Just one second. The impact and the incidence of the indirect taxes are on the different entities. So it is called as indirect taxation. Basically, the consumer is paying the tax and the supplier is paying the tax on behalf of the consumer to the government. So it is called as indirect taxation. Now, the best example in India today is GST, custom duty, central excise are the best examples of indirect taxation. Now, what are the main features of this taxation? You must be wondering why this slide I had put in the PPT. We had a question in the first paper itself. What are the main features of indirect taxation? The first feature is pervasive, then different taxation rates, then shift of tax burden, then goods and services and effect on prices. Different taxation rates means here all the products are rated at the different rate. We are having the rates ranging from 0% to 5% to 14% to 28%, and the highest rate of taxation which is levied as on today under indirect taxation is 40%. Then it has shift of tax burden. Shift of tax burden means consumer tax pay करता है और उसे supplier government को pay करता है. So there is a shift of tax burden. Now GST is levied both on goods and services. It is similarly levied on goods as well as on services. Due to GST, there is a major effect on the prices. जिस product के ऊपर 28% GST है, naturally उसकी price is going to be increased. So it depends upon the GST whether the price of the product is more or price of the product become less. So it is having impact on the price of the product. The main difference between direct and indirect tax. Again, this was asked as a distinction, as a question in the paper, where these 5 points are expected to be written. First of all, meaning, which is in my first slide, what do you mean by direct tax and what do you mean by indirect tax? Then the ability to pay. Whether you are able or whether you are not able, you are supposed to pay indirect taxation. जबकि डायरेक्ट टैक्स ऐसे नहीं होता है. अगर आपकी इनकम टैक्स की वो जो रेंज है, जो स्लैब रेट है 5 लाख से ऊपर है, तो ही आपको इनकम टैक्स पे करनी है. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू पे इनकम टैक्स. बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन के साथ ऐसा नहीं है. वेदर यू आर एबल और यू आर नॉट एबल, यू हैव टू पे the payment made by entity. In direct taxation, the person who is earning the income, he is only paying the tax to the government. Whereas in the indirect taxation, the person who is earning the income is a different person, whereas the person who is paying the tax is a different person. Progressive and regressive. This is the objective they can put in the paper. Indirect taxation is regressive in nature, whereas direct taxation is progressive. Now, what it means? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेशन का, डायरेक्ट टैक्सेशन का, इनकम टैक्स का रेट बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अप टू 5 lakhs द रेट इज 0%. फ्रॉम 5 lakh to 10 lakh द रेट इज से 20%. About 10 lakhs the rate is 30%. So it is
प्रोग्रेसिंग, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के साथ ऐसा नहीं है। आप पैसे अर्न करो या आप पैसे नहीं अर्न करो, then also you are supposed to pay indirect taxation. So it is regressive in nature, whereas direct tax is progressive in nature. And shift of payment. Direct tax is paid by the person himself who is earning the income, whereas indirect taxation is paid by the customer. Customer gives the tax to the supplier, and the supplier pay the tax to the government. For example, if you go in the McDonald, you purchase a burger, बर्गर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। आप जीएसटी पे करने गवर्नमेंट को नहीं जाते हो, आपके बिहाफ पे मैकडोनल्ड्स इज गोइंग टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, सो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ पेमेंट। दिस वाज आस्क्ड एज अ क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स in the paper, distinction between direct tax and indirect taxation. Moving ahead, the advantages of indirect taxes. It is very, very convenient. How convenient? कस्टमर को तो कुछ करना ही नहीं है, उसे तो सीधा सप्लायर को पे कर देना है। सप्लायर का हेडेक है कि वो गवर्नमेंट को कैसे पे करे। डिफिकल्ट टू इवेड, मैं चाह के भी जीएसटी से बच नहीं सकती हूँ, मैं कोशिश भी करके जीएसटी से बच नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मुझे बिल मिला जिसमें जीएसटी लिखी हुई है तो मुझे पे करनी ही है। सो वेरी डिफिकल्ट टू इवेड। Wide coverage. Now, how the coverage is wide? Here, GST is covering all the entities. आप चाहे छोटे बच्चे हो या आप कॉलेज गोइंग हो, आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो जिसपे जीएसटी लेविड है तो आपको पे करनी ही है। यूनिवर्सलिटी. नाउ व्हाट इज दिस यूनिवर्सलिटी? थ्रू आउट इंडिया the same rate of taxation is applicable for all the products. मुंबई में जीएसटी जितनी है, गुजरात में भी उतनी है, जम्मू कश्मीर में भी उतनी है। Then influence on the pattern of production. Due to indirect taxation, as the prices are increasing, due to which there is having an impact on the pattern of production. People are not interested to buy more products as the price of the product is increasing. As it is having impact on the purchasing power, so people are not motivated to work and save. But most important advantage is due to indirect taxation, the revenue of the government is increasing like anything, due to which they are able to have the social welfare activities. You must have observed, like railway, India has came up with the Vande Bharat Express. All the roads are done. और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत जगहों पे डेवलपमेंट हो रहा है। ये डेवलपमेंट इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज द टैक्सेशन कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी हाई। फ्लेक्सिबिलिटी, very less chance of flexibility is there in indirect taxation. But the disadvantage is high cost of collection, as the entire system of the GST collection is online, due to which the cost of the collection has increased. The companies which are appointed by the government for the collection of the GST, they are charging very high price. Income inequality. Now, income inequalities क्यों हो रही है? आप रिच हो आपको भी रेट ऑफ टैक्स सेम लगेगा, आप पुअर हो तो भी आपको रेट ऑफ टैक्सेशन सेम लगेगा, ड्यू टू विच द इनकम इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड. It has affected the consumption. As the prices of the products are increasing, it is affecting the consumption for a particular product. Uncertainty. Now there is uncertainty in indirect taxation. आज किसी प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस 5% है, हो सकता है कल सुबह उसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% हो जाए. So inflationary, due to indirect taxation, the price of the products are increasing, which means it is leading to inflation and possibility of tax evasion. अगर मैं दुकानदार को बोलूं कि मुझे बिल ही नहीं चाहिए तो मैं जीएसटी पे ही नहीं करूंगी, जीएसटी पे ही नहीं करूंगी तो टैक्स एवेड हो जाएगी. बहुत सारे लोग बिगर बिल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ड्यू टू विच देयर आर चांसेस दैट द टैक्सेस हैव बीन एवेडेड. Now, how this came into picture? Before GST, बहुत सारी टैक्सेस इंडिया में थी, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, बहुत सारे टैक्सेस, सेल्स टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस इंडिया में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते थे. सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगाई जाती थी. नाउ व्हाट हैपेंड इन 2006-07?
an idea came into the mind of the government to go for a tax which is going to be throughout the nation same. Finally, in 2010, a committee was formed which worked on this system of taxation. And in 2016, the government gave the accent, the president gave the approval to this tax. And finally, in 2017, 1st July 2017, GST came into picture. So it was a long journey from 2006 to 2017. Why it took so many years? Because the states, all the states are required to give their accent, to give their permission for GST. So it took long years to come into India. Now, when GST came into India, these can be asked as an objective in the paper 101st Constitution Amendment Act. As GST was applicable throughout India, so there was requirement to do a change in the Constitution. In Constitution, 101st Amendment was made in the Constitution. 3 articles were inserted. Article number 246A, 269A, 279A. और भी कुछ चेंजेस किए गए और 2017 अप्रैल में जीएसटी को हाँ बोला गया और उसके बाद 4 बिल पास हुए पार्लियामेंट में। कोई भी एक्ट पास होने से पहले बिल कहलाती है, जब वो पार्लियामेंट में पास होती है तो वो एक्ट कहलाती है। वी केम अप विद द 4 एक्ट: Central GST Act, Union Territory GST Act, Integrated GST Act, GST Compensation to Act 2017. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही एक्ट है, Central GST Act. This was the new article introduced which defined GST. Remember article number 366(2)(a), which defined GST. What it defined? It is a tax on supply of goods, services, or both, except taxes on supply of alcoholic liquor for the human consumption. GST is consumption-based tax. That is, the tax would be payable in the state in which goods and services or both are finally consumed. Exports are not taxable because the place of the consumption is outside India, whereas the imports are taxable as the place of the consumption is in India. This was the article inserted in the Constitution. After this article only, GST came into India. It very clearly says that GST is not leviable on alcoholic liquor for human consumption. Now, benefits of GST: Make in India, ease of doing business, benefit to the customers, dual model, very important. In India, we are adopting dual model of GST. GST had given more importance to make in India. You must have observed many products are now make in India. So GST is giving more weightage to make in India concept. Then dual model of GST is applicable to India. That is for the intra-state. Intra-state मतलब जो ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर हो रही है उसके लिए CGST और SGST लगाई जाएगी, और जो ट्रांजैक्शन 2 स्टेट्स के बीच में होगी उसके ऊपर IGST लगाई जाएगी. So these are the benefits of GST and the model. And just the information, बहुत सारे देशों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है. इंडिया ने जो मॉडल अडॉप्ट किया, इंडिया हैज अडॉप्टेड द कैनेडियन मॉडल. More than 150 countries in world are having goods and service tax, but the model adopted in India is the Canadian model. They can ask you as an objective, and which model we are having in India? We are having the dual model of GST. Now, these are the taxes which are subsumed under GST. Subsumed under GST मतलब GST आने से पहले ये सभी taxes थी, लेकिन जैसे ही GST आ गई 2017 से, अब ये सभी taxes नहीं है, ये सभी taxes GST के अंदर चली गई. One of the major tax is Central Excise Duty. But for your information, Central Excise Duty आज भी applicable है on the liquor.
एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन जीएसटी के बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। एक लिकर के ऊपर लगती है, द लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा लगाया जाता है फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Duties of excise on medicinal and toilet preparation, additional duty of excise, additional duty of customs. Customs आज भी है, कस्टम ड्यूटी आज भी लगाई जाती है, लेकिन एडिशनल ड्यूटी ऑफ द कस्टम्स निकाली गई है। सर्विस टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट, सर्विस टैक्स हैज बीन रिमूव्ड। These are the taxes which are subsumed. The state taxes, state VAT, जीएसटी आने से पहले हर स्टेट की अपनी अपनी वैट थी, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्सेशन। जीएसटी आने के बाद वो उसके अंदर चली गई। सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरी, all these taxes have been removed. Moving to the next slides. Just 1 minute, next people. Just 1 second. These are the certain important definitions of GST. Audit, they can put a question, what do you mean by the word audit? Audit is defined under section 213, which say the examination of records, written and other documents to verify the correctness, to assess the compliance. Business, they can put a question on business because business is having around 10 points to understand, but in a very simple way. Business here means any, आप जिस भी नाम से पुकारो, जो भी आप business कर रहे हो, that is your business. Even the supply or the acquisition of goods, including capital assets, provision by the club, admission to any premises, जैसे आप इमेजिका में जाते हो, services supplied by the person as the holder of an office, services by race club, any activity or transaction by the central government. So consideration not much important. Here it is important, e-commerce. Why e-commerce is important? Because after GST, e-commerce operators are required to do compulsory registration. So e-commerce is very much important. E-commerce operator is nothing but any person who owns, operates, manage digital or electronic facility or any platform for electronic goods, commerce. Then we have the definition of goods. Goods here means every kind of movable property other than money and securities. This definition is important. They can put the question on this. What do you mean by India? India, the definition of India has been defined under Article 1 of the Constitution. It includes, the territory of the India includes its territorial water, seabed, suboil, underlining, such waters, continental shelf, मतलब पूरा का पूरा जितना भी ये है, पूरी जमीन जहां पे खत्म होती है वो तो है ही है, लेकिन पानी के नीचे भी up to 12 nautical miles from the baseline is your territorial sea. उसके आगे 200 nautical miles वहां तक इंडिया है, and उसके आगे it is called as high sea. और उसके ऊपर जितना भी एयर स्पेस है, that is also India. So India consists of your land, your water. Yes, yes, ma'am. Sorry for the interruption. Ma'am, can you just go for the full screen and the current slide? Your current slide is not visible. Just 1 second. Ma'am, here it is showing actually. No, here it is not. Again, I'm going. Yeah. Just one. Yeah. Is it visible now? Yes, ma'am. It is visible Yeah. now. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. We are talking about India. So India includes not only the land,
but the water also and above air space also. Now water क्या include होता है, जहां पे आपका सी फेस स्टार्ट होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स, जहां पे हमारा सी फेस चालू होता है, जहां पे लैंड खत्म होती है, उस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8379 किलोमीटर्स। उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स, जहां पे हमारी शिप्स खड़ी रहती हैं, दैट इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके आगे दैट इज द हाई सी विच इज द वर्ल्ड वाटर, जो वर्ल्ड प्रॉपर्टी है। तो जहां से भी हमारी बेस लाइन चालू होती है उसके आगे अराउंड एक्सक्लूसिव जोन है 200 नॉटिकल माइल्स। सिर्फ पानी नहीं, पानी के अंदर जो भी चीजें हैं, जो पानी के अंदर जो भी है, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दैट इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ योर इंडिया। Ma'am, it is not moving actually. Try with the arrow. Yeah. Yes. Done. Yes. Yeah. Now coming to the non-taxable supply. GST is having tax on all the products and all the services, but there are certain products which are having no taxation. Like one of the product is petroleum. Petroleum product does not come under GST. उनके ऊपर excise duty लगाई जाती है. So there are certain products which are non-taxable. Government in the year 2017 had came up with a list of items of around 82 items which are 82 services which are exempt and around 112 goods which are exempt. This is the GR which has been published by the government. Then come the definition of person. They had asked this definition in the paper. Person definition you all have learned in your इनकम टैक्स ऑल्सो, लेकिन इनकम टैक्स में सिर्फ 7 ही एंटिटीज थी जो पर्सन कहलाती थी, यहाँ पे उससे ज्यादा है। एंड दिस वाज आस्क्ड एज 5 मार्क्स डेफिनेशन। एन इंडिविजुअल, HUF, फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉर्पोरेशन, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। आप जो भी सोचो दिमाग में, जो भी आपके एंटिटी आएगी, दैट इज पर्सन अंडर GST। प्रिंसिपल सप्लाई, that was not a concept before GST at all. There are two types of supply. One is composite and one is mixed supply. They had asked a short note on composite and mixed supply. जब हम 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट को इकट्ठा सेल कर रहे हैं जिनको हम अलग नहीं कर पाएंगे, 2 or 3 products when they are bundled together which cannot be separated and they are sold, that is called as composite supply. For example, if I travel by the Vande Bharat Express, in Vande Bharat Express, along with traveling, I am getting food also. So that is a composite supply. In Vande Bharat Express, when I am traveling, my major thing, my dominance is traveling, not the food. So principal supply is travel, whereas food is the ancillary supply. Such a type of supply is called as composite supply. लेकिन ऐसी भी supply होती है where we are going to mix the products together, that are called as mixed supply. दिवाली पे आपने देखा होगा हैम्पर दिया जाता है जिसमें चॉकलेट भी रहती है, कोल्ड ड्रिंक भी रहती है, ड्राई फ्रूट भी रहता है, मिक्स किया जाता है, जानबूझ के मिक्स किया जाता है, that is called as mixed supply. So in GST we have principal composite supply and mixed supply. कंपोजिट सप्लाई का मतलब है जो चीजों को हम बंडल कर रहे हैं और उनको हम अलग नहीं कर पाएंगे, वेयर मिक्स्ड सप्लाई को हम अलग अलग करके भी सेल कर सकते हैं। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो GST किसके ऊपर लगेगी? GST पूरी सेल के ऊपर लगेगी, लेकिन रेट ऑफ टैक्स होगा जो प्रिंसिपल सप्लाई का होगा। और अगर मिक्स्ड सप्लाई है तो जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा, दैट वुड बी चार्ज्ड ऑन द एंटायर सप्लाई। These two concepts have been introduced with GST. Then one more concept has been introduced with GST, that is the reverse charge. Now, what is this reverse charge? एक हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन लेते हैं। मैंने एक मोबाइल खरीदा C55। आई वेंट टू द मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप वाले को मैंने कहा कि मुझे एक C55 मोबाइल दे दो। उन्होंने मोबाइल दिया, बिल दिया। बिल में बिल अमाउंट था 10,000।
जीएसटी थी 28%, दैट कम टू 2800। मैंने सप्लायर को, मोबाइल वाले को 12,800 दे दिया। मोबाइल वाले ने 10,000 अपने पास रखा, 2,800 गवर्नमेंट को दे दिया। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट चार्ज मैकेनिज्म, वेरी सिंपल नॉर्मल ट्रांजैक्शन। लेकिन अब अगर उल्टा हो जाए, आपके कॉलेज वालों ने आपके लिए फेयरवेल अरेंज की, फेयरवेल में आप सबको एक एक सैंडविच खिलाया, फाइनली जो आपके सामने कॉलेज के मिलता है, और एक एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई। अब जिस सैंडविच वाले से उन्होंने सैंडविच मंगाया था वो रजिस्टर्ड नहीं था, और आपका कॉलेज, एसएसटी कॉलेज को कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तो लेनी है, तो आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है। इस केस में आपके कॉलेज ने सैंडविच वाले के बिहाफ पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे की। ये हो गया उल्टा। द कंज्यूमर is paying the tax on behalf of the supplier, which is the reverse thing. So this is nothing but reverse charge mechanism. Again, this was introduced only with GST. Yes, the person who pays the tax is the taxable person, and all the goods and services on which the GST is levied, they are taxable supply. These are certain important definitions in GST, but from the exam perspective, composite supply, mixed supply, person, then e-commerce operator, reverse charge mechanism. These can be asked, and even business, one of these can be asked in the paper. Now, understanding, before going to the payment of the tax, actually this is the 5th unit of the syllabus, but every time when I take a session, I take this topic first. The reason behind this, a student should be aware about registration, then only he would be able to understand who is going to pay the tax. There are 3 important sections for registration: Section 22, Section 23, and Section 24. Section 22 make you understand about the person who is required to do the registration based on his turnover. When you are required to do the registration based upon your turnover, then you are under Section 22. Section 23 speak about registration किसको compulsory नहीं है, and Section 24 speak about registration किसको कंपल्सरी है। आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो, लेकिन योर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इफ यू आर अंडर सेक्शन 24। इफ सेक्शन 24 का कोई भी क्लॉज आपको अप्लाई हो रहा है, यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 22, दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर 2 पॉइंट्स। एक तो इसके ऊपर एक 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, दूसरी चीज एक शॉर्ट नोट इज गोइंग टू कम ऑन रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट सेक्शन 22 से, if you does not belong to the special category states. Now what are the special category states? We have Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Tripura, and Uttarakhand and Kerala. If you don't belong to any of these states, and if your turnover is more than 40 lakhs, you become liable for registration. And if you belong to these special category state, and if your turnover is more than 20 lakhs, you become liable for registration. And if you're dealing only in goods, if you're dealing in goods and services, or if you're dealing only services, and you don't belong to Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, MMNT, इन 4 स्टेट्स को अगर आप बिलोंग नहीं करते हो, मतलब आप पूरे बाकी इंडिया को बिलोंग कर रहे हो, इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs, you become liable for registration. And for these 4 states, the turnover limit is 10 lakhs. So this is section 22. Surely a problem is expected on this. टर्नओवर दिया जाएगा। अब लेकिन आपको ये समझना है कि टर्नओवर हम किसको बोलेंगे, जो आपने सेल किया क्या वो ही टर्नओवर कहलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज सेक्शन 26 which explain what do you mean by turnover. Turnover means all your taxable supply, all your exempt supply, all exports,
all your interstate supply, but it should not be including GST, SGST, CGST, IGST, and any tax, any purchases which you had made on the reverse charge mechanism. Again, I'm repeating, Section 22 is the registration based on turnover. If your turnover is more than 40 lakhs and you don't belong to all the special category states, then you're liable for registration. And for goods and services, or only for services, if your turnover is more than 20 lakhs and you don't belong to Manipur, Mizoram, Nagaland, and Tripura, you are liable for registration. Coming to section 23, who are not liable for registration? First of all, an agriculturalist. An agriculturalist is not liable for registration. अब ये agriculturalist कौन है? वो खुद खेती बाड़ी कर रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स खेती बाड़ी कर रहे हैं, या उसने अपना खेती पे काम करने के लिए दूसरों को लगाया है और वो उनको सुपरवाइज कर रहा है, तो वो कहलाएगा एग्रीकल्चरिस्ट. एग्रीकल्चरलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू registration. Then any person who is dealing in purely non-taxable goods or exempt goods, he is not required to do registration. And any person who is notified by the central government not to do the registration, then he would not be required to do the registration. कल उठ के अगर government बोलती है SST college is not required to do the registration, so SST college would not be required to do the registration. Then comes section 24. Who is required to do the registration compulsorily? Section 24 का पहला ही statement है, notwithstanding anything contained in section 22. मतलब section 22 को भूल जाओ. अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो, you are compulsorily required to do the registration. जो हमारा लास्ट पेपर था उसमें शॉर्ट नोट आया था, कैटेगरीज, राइट ऑल द कैटेगरीज which are required to do compulsory registration for 5 marks. There are around 10 categories. 5, 8, 9 भी लिख के आए थे बच्चे तो मार्क्स मिली थी. पहली कैटेगरी, अ पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई. आप चाहे 1 रुपए की ही इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करो, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो स्टॉल्स लगाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, कभी कभार कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. पर्सन एट ई कॉमर्स ऑपरेटर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जैसे टैक्स पे करनी है. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. देन person who is an agent of these, who is doing a taxable service on behalf of some other person. Input service distributor, every electronic commerce operator. उसके अलावा गवर्नमेंट जिसको भी बोले कि आपको रजिस्टर करना है, कंपल्सरी करना है, कल उठ के अगर गवर्नमेंट बोलती है भावना बिनवानी हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन, आई हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन विदाउट क्वेश्चनिंग. सो दिस इज सेक्शन 24. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर थियरी है, थियरी क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत कम है. The simple procedure is you have to fill the form. You should be having your PAN card. You should be having your Aadhaar card. E-verification would be done. All the details you have to fill in the form which is generated online on the GST portal, and you have to do the registration. Once you fill the entire form within 7 working days, the reply will come to you. Either more inquiry would be asked from you or the certificate would be given to you. So there are set of around 10 forms which explain about the process of registration. The first one is GST REG 01, GST REG 02. आप जब पहला फॉर्म भरते हो तो वो GST REG 01 होता है, then 02, 03, ऐसा पूरा प्रोसेस है, and it is purely a theory question. So this was about registration. Another concept which came with GST was composition scheme. पेपर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएगा और दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपोजिशन स्कीम पे आएगा. दोनों में ऑप्शन रहेगा. अब ये कंपोजिशन स्कीम क्या है? कंपोजिशन स्कीम ऐसी स्कीम है जो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए रखी गई है. स्मॉल ट्रेडर्स यहाँ पे है, मतलब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर कम है टर्नओवर, तो आप ये स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं. ये स्कीम को आप ऑप्ट क्या कर सकते हो? अगर आप ये स्कीम में जाते हो तो आप अपने कस्टमर से
टैक्स नहीं कलेक्ट करोगे, न ही आप कोई इनपुट टैक्स का बेनिफिट उठाओगे, लेकिन आप जो टैक्स पे करोगे दैट वुड बी एट अ लो रेट ऑफ टैक्सेशन, दैट इज 2%, 3%। एंड फॉर द रेस्टोरेंट, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में नॉन एसी में 5% लगती है और ऊपर जाते हैं एसी में तो 18% लग जाती है। तो ये 5% क्यों लग रही है? क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आती है। कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। टर्नओवर, टर्नओवर डेफिनेशन सेम वही है जो रजिस्ट्रेशन की है, इसीलिए these two questions always go parallelly. Composition is asked as an option with registration. Now coming to the very important concepts of supply. Before we go this, just 1 minute. I hope this is visible to you. Yes, ma'am, it is visible. Yeah. Because before going to place time and value of supply, it is very important to understand the levy and the collection of GST. Now, again, why this is important? We are having a 10 marks numerical question on this topic. Directly, they asked a 10 marks numerical question. Question क्या आएगा? Question इतना आएगा, identify whether the goods or the services, whatever they give, are taxable or not taxable. If taxable, calculate the turnover and the rate of tax would be given to you. Apply that rate of taxation and calculate the amount of tax. This would be the question asked in the paper for 10 marks. Option B same वही रहेगा, services and goods के ऊपर, again for 10 marks. Section 9 of the CGST Act, Section 5 of the IGST Act. Rules provide for the levy and the collection of the tax. कोई भी tax बिना levy के पूरी ही नहीं हो सकती. Now what they say, CGST would be applicable on all the intrastate supply of goods and services. SGST would also be applicable on all the intrastate. UTGST would be applicable on the union territory supply, whereas IGST would be applicable on all the interstate supply of goods and services. Now, what are the rates of taxation? The rates of taxations are recommended. It starts from 0%, 0.125%, 1.5, 2.56, 9, and 14%. And the maximum rate of taxation as of now had not exceeded 40%. You have to remember this thing. The maximum rate is 40% as of now. GST is not on the supply of is not applicable on petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel. ये भी ऑब्जेक्टिव करके वो पूछते हैं कि GST इनके ऊपर अभी applicable नहीं है, but the date we don't know from where it can be applicable on these products. High-speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel, ये पांचों के पांचों याद रखने हैं, इनके ऊपर GST नहीं लगती. Now, what do you mean by supply? हम बार बार पढ़ रहे हैं GST सप्लाई के ऊपर है, सप्लाई के ऊपर है, लेकिन सप्लाई क्या कहलाएगा? Supply can be anything, any sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, anything can be called as supply. But it should be for some consideration. There should be two persons, one should be the buyer and one should be the seller. And if there is any import, it is not necessary that it should be in the course of business. There are certain transactions in Schedule 1, even they can be called as supply without even consideration, and certain transaction in Schedule 2, Schedule 3, जिसके ऊपर GST नहीं लगती. So these are various activities. They can ask you this question, non-taxable supply. Now, what is non-taxable supply? Non-taxable supply is a supply under Section 7 on which is not chargeable to tax as it is excluded by the charging section.
Alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, crude matlab kacha petroleum, high speed diesel, motor spirit, natural gases, aviation turbine fuel. These all are non-taxable supply. We can expect a short note or short note में यही slide पूरी हमें लिखनी. Now coming to the important concept. Ma'am, your screen is not visible. Yes, ma'am. Yes, I know it is not visible. In between, maybe some network error is coming, so it is happening due to which. Yes, yes, sure. Take your time, ma'am. No problem. Is it visible now? Yes, ma'am, it is visible. EST, time and place of supply. Yes, yes. But it is not moving. I don't know why it is moving away. Might be it will be network. Might be the network error, yes, ma'am. Actually, I'm in the college. Okay, all right. So it is coming. Yeah, now it is visible. No, it's visible. Yeah. Yes. Now understanding the next concept. Place and time of supply. Very much Ma'am, important when we. Yeah, yeah. Yes, place and time of supply. Why this place and time of supply is important? Again, a full-fledged numerical question. One question would be asked on place of supply and one question would be asked on time of supply. Now, what place of supply they are going to ask in the paper? Whatever it is appearing on the slides which are going to come, that type of questions only they are going to ask in the paper. The question would be carrying 10 marks. 5 sub-questions would be there. One question, 2 marks, in which you have to identify the place of supply and give the reason why this particular place is the place of supply. But why, before understanding that this is a place of supply, we have to understand why place of supply is having importance. When we speak about GST, it is the consumption-based tax. Whenever you are going to consume, then only you are going to pay the GST. Say if I'm going to purchase a mobile for myself or gifting for somebody, when I'm going to consume, that means I'm going to utilize that mobile. Before that, I'm going to pay GST. So GST is a consumption-based tax. Now we have to understand, अगर consumption किसी और state में हो रही है, तो उस स्टेट में जीएसटी कलेक्ट की जाएगी. कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्लेस, कौन सी स्टेट में जीएसटी वुड बी पेड ऑफ. सो दिस कंसेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट. Also, time of supply is important, which make you to understand when the GST is required to be paid. To understand, if the location of the supplier and the place of the supply is in the same state, we call it as intrastate. On that, CGST and SGST would be applicable. But if they are in another state, then only IGST is going to be applied. Yes. Section 10 is applicable. Section 10 of the IGST Act is applicable. The first situation, if there is actual movement of goods, that means the goods have started moving from one place to another place. The place
where the termination of the delivery is done, where the goods are terminated, where the movement of the goods is terminated, that would be the place of supply. For example, दिल्ली से goods निकल रही है चंडीगढ़ के लिए, गुड्स निकल चुके हैं, ट्रक में लोड हो गई है, चंडीगढ़ में उसका टर्मिनेशन हो रहा है, मतलब उसकी डिलीवरी खत्म हो रही है, चंडीगढ़ वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. आपका रीजन यही होगा, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रिसिप्टेंट, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. से गुड्स मूवमेंट नहीं हो रही है, sorry, the goods are movement from one place to another place, लेकिन for example say buyer is in Mumbai, supplier is in Delhi, लेकिन buyer बोल रहा है मुंबई में गुड्स की डिलीवरी मत करो, गुड़गांव में कर. इस सिचुएशन पे जो बायर का प्लेस होगा, that would be the place of supply. This entirely they had asked as a 10 marks question only on this one situation. And your reasoning would be the principal place of the business of the third person जिसके डायरेक्शन पे गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है, that would be the place of supply. इसके ऊपर लास्ट पेपर में पूरा का पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सिर्फ ये एक ही सिचुएशन. Supply does not involve movement of goods. When there is no movement of goods, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय जहां पे भी वो गुड्स लोकेटेड है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. देन गुड्स आर असेंबल्ड, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. For example, the lift is installed in the building. Many times they are asking the question on the lift itself. Lift is installed in the building. So building jahan pe lift is installed, that would be the place of supply. Then goods when they are boarded on a conveyance. मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रेन में फूड मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जिस स्टेशन से फूड को ट्रेन में चढ़ाया जाएगा, आई एम रिपीटिंग, जिस स्टेशन से फूड को ट्रेन में चढ़ाया जाएगा, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. Now coming to the goods, if they are imported, if any goods are imported, the location of the importer would be the place of supply. Now coming for the services. So I hope you understood for the goods. There are 5 situations. If there is a goods, if the goods are transported from one place to another, if any third person gives the instruction, if there is no transport, if the goods are loaded in any of the vehicle, and if the goods are imported. 5 situations, कम से कम 3 situations पक्का पेपर में आएगी. Then coming to the services related for the immovable property. Now, if any services related to the immovable property is provided, say XYZ Limited is in Mumbai, they provide the services to ABC Limited for a construction of a bridge in Noida. जहाँ पे bridge construct हो रही है, that would be the place of supply of service. अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई ऐसी प्लेस के लिए जो आउटसाइड इंडिया है, से फॉर एग्जाम्पल ABC Limited provides a service to XYZ Limited for a building which is in Dubai. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, बिल्डिंग दुबई में कंस्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन जो सर्विस जिसे हम दे रहे हैं वो दिल्ली के है, the person who is receiving the service would be the place of supply. कोई accommodation for any function and including services for that such function, जहां से भी हम आ रहे हैं लेकिन हमें अकोमोडेशन दिया जा रहा है रहने के लिए फॉर सम बिजनेस फंक्शन, द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर मैं किसी होटल में घूमने जा रही हूँ और किसी होटल में जाके रह रही हूँ, मैं कहाँ से भी बिलोंग करती हूँ, सपोज मैं मुंबई के ताज होटल में जाके रहने जा रही हूँ, मुंबई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर मैं किसी इवेंट में जा रही हूँ, किसी इवेंट को मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में मैं स्पीकर बन के जा रही हूँ, तो जहां पे भी वो इवेंट, जहां पे भी वो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. मैं अम्यूजमेंट पार्क में जा रही हूँ घूमने के लिए, मैं इमेजिका में जा रही हूँ, इमेजिका वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. Yes, if I'm organizing some event, if some event is being organized and I'm providing services for that event,
like for fair, for exhibition. If the receiver is a registered person, the location of the recipient, and if the receiver is a non-registered person, the venue of the event. If I'm taking services from restaurant, the place where the actual performance is given. If I'm taking services for the beauty parlor, the place where the actual performance is given. If the service is provided for the transportation of the goods, then the location of the recipient. And if he is an unregistered person, location where the goods are handed over for the transportation. If the services are related to training and performance appraisal, say for example, I have been appointed to give the soft skill services to any of the company in Delhi. Now, if the company is the registered one, then the location of the company would be the place of supply. If the company is an unregistered one, जहाँ पे भी वो services provide की जाएंगी, that would the place of performance would be the place of supply. Now हमने देखा फूड का ट्रेन में चढ़ाया गया, तो जिस स्टेशन से फूड को चढ़ाया गया, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. लेकिन फूड प्रोवाइड करने के लिए जो मुझे सर्विस दी जाएगी, उसके लिए प्लेस ऑफ सर्विस क्या होगी? तो जिस स्टेशन से ट्रेन चालू होगी, सपोज वंदे भारत एक्सप्रेस है, मैं कल्याण में वंदे भारत में चढ़ रही हूँ, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई, सीएसटी वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज. Now, if I'm taking the services related to internet, अगर मेरे घर पे राउटर लगा हुआ है तो मेरा घर है प्लेस ऑफ सप्लाई. मेरे पास अगर मोबाइल है, जो पोस्ट बिलिंग की जाती है, तो जो बिल पे एड्रेस लिखी रहेगी, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड अगर मेरा प्रीपेड बिल है, मैं इंटरनेट से कर रही हूँ, द लोकेशन ऑफ द रिसिप्टेंट, मैं बाहर जाके मोबाइल वाले से करवा रही हूँ, तो जहां से मैं करवा रही हूँ, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. If there is any advertisement services given to the government, the place where the advertisement is displayed. And if any passenger transportation services is given, if the person is registered, then the location of the recipient. If the person is unregistered, जहां से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, that would be the place of supply. आप जब भी अपनी टिकट आजकल निकालोगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं whether you are registered or not. अगर आप रजिस्टर्ड हो, आपकी लोकेशन होगी प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, तो जिस स्टेशन से आप ट्रेन में चढ़ोगे, that would be the place of supply. If any services related to banking and other financial services, अगर आप बैंक से कोई सर्विस ले रहे हो और उस बैंक में आपका अकाउंट है, तो जो एड्रेस आपकी लिखी हुई है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. आप ऐसी बैंक से सर्विस ले रहे हो जहां पे आपका अकाउंट नहीं है, तो जो बैंक की एड्रेस है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर आप इंश्योरेंस सर्विस लेते हो, if you are registered, location of the recipient. If you are unregistered, location of the recipient in the supplier's record. So this is about place of supply. This is not much important because out of India they give very less, but this service they give many times. For example, if you are providing a service outside India to a person, then that outside India would be the place of supply. This sometimes they asked. This we have done for the destination also. Similar, what is for inside India, it is for outside India also. Now coming to the database access or retrieval service, online information database or retrieval services. Now this service, why it is important? If any of the outside company give you these types of services like advertising on internet, cloud services, e-books, movie, music, software, providing data or information, online digital content, online gaming, if these services are provided to you, the place of supply would be the place of recipient. That would be the place of supply. So a 10 marks question is expected on your entire place of supply. Now coming to the time of supply. Again a 10 mark question on time of supply. What exactly is time of supply? Time of supply is nothing but the date on which you become liable to pay GST. We have to understand for goods as well as services. These are the legal definitions. So in short, we have to go. Yes.
If there is a normal transaction, that is your forward charge. Forward charge मतलब simple transaction, आप गए, आपने goods खरीदे, supplier को GST दी. Date of issue of invoice by the supplier, date on which supplier received the payment, last date on which the supplier issue the invoice. Last date मतलब जब आप सर्विस, जब आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, जब गुड्स मूव होते हैं, that is the last date on which the invoice should be generated. और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट का मतलब होता है डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसिप्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर. A normal question comes on this only. Date of issue of invoice by the supplier, जिस दिन वो उसने invoice generate किया, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई, या जिस दिन उसका लास्ट डे है इनवॉइस जनरेट करने का, मतलब जिस दिन गुड्स डिलीवर हुए, जिस दिन गुड्स निकाले गए डिलीवरी के लिए. इन तीनों डेट में से जो भी डेट सबसे पहले होगी, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, which is expected in the paper. Reverse charge, very remote chance. One second, the only slide which I have to show you is for, there are various situations, but this is important for the services. Services means date of invoice. If invoice is issued within the time matlab within 30 days of the service, if the invoice is issued, it is within the time. If it is so, then date of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier. If the bill is not issued within 30 days from the providing of the service, then date of provision or date of receipt of payment, whichever is earlier. देखो पेपर में कैसे आएगा, एक आएगा गुड्स के ऊपर, एक आएगा सर्विसेज के ऊपर. सर्विसेज में हमें चेक करना है कि जो बिल बनाया गया है वो 30 दिन के अंदर बनाया गया है कि नहीं. अगर 30 दिन के अंदर बनाया गया है, देन डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट. अगर 30 दिनों में नहीं बनाया गया है, देन डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ रिसिप्ट. प्रोविजन मतलब जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की वो, या तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. So this is in nutshell about the place of supply. Sorry, the time of supply. Apart from time of supply, we have value of supply. Now, what is value of supply? Value of supply का मतलब है जिसके ऊपर GST लगाई जाएगी. Again, I am repeating, जिसके ऊपर, जिस एग्रीगेट वैल्यू, जिस असेसेबल वैल्यू के ऊपर GST लगाई जाएगी. अब ये असेसेबल वैल्यू क्या होती है? असेसेबल वैल्यू इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो सप्लायर आपसे चार्ज करेगा. उसके अलावा अगर सप्लायर आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट करके दे रहा है, एक्स्ट्रा पैकिंग करके दे रहा है, टेस्टिंग कर रहा है आपके प्रोडक्ट की, स्पेशल पैकिंग करके दे रहा है, ऐसी कोई चीज है तो वो उसमें ऐड की जाएगी. लेकिन अगर प्राइस में जीएसटी डली हुई है तो जीएसटी वुड बी सब्ट्रैक्टेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, if there is any discount given by the supplier to you, that discount would also be deducted. And if there is any subsidy given by a non-government organization, अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो वो माइनस करना अलाउड है. लेकिन अगर किसी और ने सब्सिडी दी है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड एसोसिएशन ने आपको सब्सिडी दी है, अगर ऐसी कोई सब्सिडी है और वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्राइस इज आफ्टर द सब्सिडी, तो वो सब्सिडी को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी गेटिंग द असेसेबल वैल्यू. Again, I am repeating, assessable value is nothing but the price which is charged to you plus any extra charges which are being charged, like transportation, packing, special packing, testing charges, inspection charges. या सप्लायर के बिहाफ ने, कस्टमर ने कोई खर्चा किया है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कस्टमर ने किया है तो वो भी ऐड हो जाएगा. माइनस एनी डिस्काउंट विच इज बीन गिवन. डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द लिस्ट प्राइस जो दी रहेगी, माइनस ऑल द टैक्सेस. ऑल द टैक्सेस का यहाँ पे मतलब है जीएसटी वाली, जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी. लेकिन म्युनिसिपल टैक्सेस है तो वो हम उसमें ऐड करेंगे. माइनस एनी सब्सिडी of the government if not deducted. If deducted, ignore it. Add any subsidy
given by a non-government organization. You would be getting the assessable value, and based on this assessable value, you are liable to pay the tax. Again, a 10-mark numerical question, full-fledged. And the last question which comes is input tax credit. Now we have to understand this concept. What is this input tax credit? Whenever I am manufacturing a product, for manufacturing a product, whatever inputs I am utilizing, अगर मैंने उसके ऊपर टैक्स पे की है, तो सेल करने के टाइम पे जितनी भी टैक्स कैलकुलेट होगी, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स. उस आउटपुट टैक्स में से मैं इनपुट टैक्स माइनस करूंगी, और जो रिमेनिंग है दैट वुड बी आई एम गोइंग टू पे टू द गवर्नमेंट. बट यू हैव टू फॉलो वन रूल. इफ इनपुट टैक्स आईजीएसटी की ज्यादा है और आउटपुट टैक्स पेएबल कम है, तो आईजीएसटी का जो नेगेटिव बैलेंस बचेगा दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. लेकिन सीजीएसटी का एक्सेस अमाउंट एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, एसजीएसटी का एक्सेस अमाउंट सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग इज पेनल्टी. मुझे टैक्स पे करनी थी और मैंने 10 दिन टैक्स लेट पे की. 18% पेनल्टी पर डे द पेनल्टी स्टार्ट, एंड इट इज 18% पर एनम. मुझे इनपुट टैक्स नहीं लेना था, लेकिन मैंने इनपुट टैक्स ले लिया. गलती हो गई. जब रियलाइज हुई और मैंने उसको रिवर्स कर दिया, जब मैं रिवर्स कर रही हूँ, there is an interesting penalty which is 24%. So this is the last part of GST. Now coming to your paper, what we have in your paper, we would be having question number 1, entirely objectives. Question number 1A surely would be MCQ. 1B, probably match the following or true or false. 12 रहेंगे और उसमें से आपको 10 ऑप्ट करने हैं. कोई रीजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है. Question number 2 would be identify whether the goods are or services are taxable or non-taxable, और उसके साथ they can put place, time or value. Question number 3, again place, time or value. Question number 4, input tax credit. उसके साथ जो सेकंड पार्ट रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा कंपोजिशन स्कीम और दूसरा ऑप्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन स्कीम. Generally, this would be the paper pattern, one of the simplest one. And question number 5 is 2 theory questions of 10 marks, or 6 short notes they will give you, out of which you have to attempt any 4 short notes. So this would be in a nutshell your paper. And most important thing, this is the applied component. So you all have to attempt this paper in your own respective college only. Whatever be your center, but this paper would be conducted in your own college itself. So this is from my set. Kumkum madam, I completed with the session. If there are any queries, they can ask. Yes, ma'am. Yeah. Is there any query? Till now, there are no queries, ma'am. Good. Either they have understood everything, or they have not understood. No, definitely you have explained very well. So definitely students have understood. And so thanks a lot. It is very difficult to cover all these concepts in one session. So thank you so much for your valuable time and valuable content and accepting our invitation. Definitely the pattern paper also will help the students a lot for preparing their exams. So I would like to thank our principal, sir, Dr. J.C. Purswani, sir, and IQSC coordinator, Khushbu Purswani, ma'am, our HOD, Department of Commerce, and our technical team for smoothly conducting this session. Thank you so much. Thank you once again, ma'am. Thank you, madam, for inviting me. Welcome, ma'am. I hope session would be useful to the students. Yes, ma'am. It is useful.
You have explained very well. It was wonderful session. Even I also attended whole session. It was very nice. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, Welcome. can I leave? Yes, yes, ma'am.